बड़ी करते हैं, एवरीवन करते हैं, क्या क्या एवरीवन करते हैं। हमारी लास्ट मुलाकात लास्ट ईयर हुई थी, सो जुमा भी मुबारक, यस, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू टू। ओके, एनी क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट ईयर? जब तक बाकी बच्चे आ रहे हैं ऑनलाइन, एनी क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट ईयर? हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। लास्ट ईयर से कोई सवाल नहीं है? सवाल क्या था, नेशन और स्टेट का दोबारा करिएगा प्लीज। वो कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं था, मुझे समझ नहीं आता, देखिए पढ़ लिया था मैंने बट समझ नहीं आया। स्टेट और नेशन कम फर्स्ट, अगर आप जरा प्लीज। इको बहुत आती है, अब सबको नहीं आती है समझ, जब किसी को आती है समा तो उसका मतलब ये होता है कि वो किसी एक का इशू है, सबका नहीं है। अच्छा, वो लास्ट ईयर खत्म हो गया सना, हाउ यू नो दैट व्हाट होल्ड्स फॉर अस in what is there for us in 2021, so don't underestimate 2021. Let's be cautious. हम 2020 के बारे में यही कहते थे, so let's not make the devil of 2021 angry at you, so be humble. Yes, true. ओके, आपका कोई सवाल नहीं है बट मैं पूछ लेता हूँ सवाल, अगर आप मुझे इजाजत दें प्लीज। ओके, सवाल है जी, नेशंस एस्टैब्लिश स्टेट और इट इज स्टेट दैट डेवलप्स नेशन। लेकिन जी इट्स नॉट अबाउट, इट्स लाइक चिकन एंड एग एनालॉजी। मतलब एग पहले आता है या चिकन पहले आता है, नेशन स्टेट बनाती है, स्टेट नेशन बनाता है, दैट्स काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग। बट इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर हम देखें इस सेंस को तो कौन किसे बनाता है, दैट्स नॉट व्हाट इज इंपॉर्टेंट। व्हाट वी नो इज that the people living in a state are called one nation. Now whether nation made a state or states made the nations, it depends from state to state. For example, in Pakistan's case, a nation acquired a state. हम ये समझते हैं कि हम नेशन से एक स्टेट बनी, और इसी तरीके से अगर आप चले जाएं इजराइल की तरफ, a nation establishing a state, there are lots of examples over there, but there are also states that have then ultimately established a nation. जो यूरोपियंस हैं, जो अमेरिकन हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्लेम करते हैं that the state has developed into a nation. So it can be both ways. जनरल कासलमानी से बात स्टार्ट हुई थी, that's true जी, जनरल सलमानी की से बात स्टार्ट हुई थी और खत्म कर्नल कोरोना वायरस पे हुई है। So why we need Senate efficiency और सिविल असेंबली are more efficient? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है अहमद, मैंने इसको कहा था कि एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में जाके। मैंने शॉर्टली वहां पे बताया था that bicameral legislatures need upper house, क्योंकि सेनेट अपर हाउस है, bicameral sorry federations need bicameral, in federations need two houses. फेडरेशंस क्या होती हैं, तो ऑब्वियसली हम इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर, आज नहीं नेक्स्ट क्लास के अंदर के एंड पे या उससे नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबब्ली हम डिस्कस करेंगे फेडरेशन को, फिर इस सवाल का जवाब डिटेल्स है। खत्म भाई तो सब पे नहीं हुआ, अभी तो हुआ ही नहीं खत्म। दैट कुड बी अ गुड एक्सप्लेनेशन जिशान। नेशन ने स्टेट पाकिस्तान बनाई थी, अब स्टेट नेशन बिल्ड करेगी, होप सो। अच्छा, मेरा सवाल है जी आपसे, तो मुझे इजाजत दीजिएगा प्लीज। कल हमने बात की थी कि जो लेजिस्लेचर है इट टेक्स रेसिडेंस, लेजिस्लेचर की कुछ पावर्स होती हैं, तो जल्दी जल्दी बता दें क्या पावर्स होती हैं, एक दो हर बंदा एक पावर बताता है, जस्ट वन पावर प्लीज, ईच वन ऑफ यू प्लीज स्टार्ट सेइंग समथिंग, मेक योर फिंगर्स वर्क। इम्पीचमेंट ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, अली ट्रू। बिल्स पास होते हैं, लॉ होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है, मेकिंग ऑफ लॉज, यस। रिमूव हेड ऑफ द स्टेट, इम्पीचमेंट, यस। Declaration of war, yes. Influence foreign policy, yes. Financial controls, yes. You are right, all of you are right. ये major कुछ powers हैं
वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कुछ स्टेट में होता है, पार्लियामेंट्री स्टेट में होता है, दैट्स ट्रू, यू ऑल आर राइट, दैट्स ट्रू। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है, मैंने आपको ये भी कहा था लेजिस्लेचर्स आर प्लूरल बॉडीज, लेजिस्लेचर्स आर प्लूरल बॉडीज, एंड प्लूरल बॉडीज से मतलब ये है कि वहां मल्टीपल मेंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन पाकिस्तान नेशनल असेंबली? और नेशनल के मेंबर्स कितने हैं? यस अली, 342 जी, you are right, all of you, 342 members. Now question is, if the law is to be made in Pakistan, how it is made, what kind of, क्या 342 की consent चाहिए होती है, how much members consent is needed? 2/3, 2/3, 2/3, 1/3, 1/3, but I assume 1/3 ही होगा, obviously. All of you are wrong. All of you are wrong so far. 51% father which are wrong. Majority of each house. Sadaf, thank you. 50% plus 1, Zishan, you are right. 50% plus 1, not 51%. Ali ne likha padha but last simple majority. Okay. अगला सवाल, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है पाकिस्तान में लॉ मेकिंग के लिए। एक एग्जांपल दिया आपने, अमेरिका में चले जाए, in US if they have to make a law, how many members are there in the lower house of the US? US का lower house है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, किसी को आइडिया हो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वालों को, अमेरिका वालों को? अलीशा, थैंक यू। 435 मेंबर्स हैं वहां पे लोअर हाउस के, राइट। क्वेश्चन इज वहां कितनी मेजॉरिटी चाहिए? 2/3, 1/4, 1/5, जितनी भी आप 2/3 लिखी जा रही है। 50% प्लस 1 जिशान ने लिखा, 3/4, 2/3। ओके, स्पेशल मेजॉरिटी कमरान ने लिखा। रिजिड प्रोसेस, यस बट मेजॉरिटी क्या चाहिए? दैट्स द पॉइंट, इट इज रिजिड बट हाउ रिजिड? डज इट मीन ऑल ऑफ देम? नो, वहां पे चाहिए होती है जी लॉ मेकिंग के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। What is the difference between simple majority and absolute majority? ये अंडरस्टैंड कीजिएगा दो टर्म्स। ये पेपर में लिखने वाली नहीं है, बट जब हम पेपर 2 में जाएंगे तो पेपर 2 में जाके आपको लिखना पड़ेगा किस मुल्क में लॉ पास करने के लिए मेजॉरिटी कितनी चाहिए होती है। जो मैंने कहा था 95% सेम फंक्शन होंगे, थोड़ा सा फर्क होगा। उनमें से एक फर्क ये होगा, किसी जगह सिंपल मेजॉरिटी, किसी जगह एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा जी, कुछ लोगों को शायद आइडिया ऑलरेडी हो, बट लेट मी एक्सप्लेन इट। सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, अब अंडरस्टैंड कीजिएगा प्लीज। अपने अमेरिका को नहीं देखना, पाकिस्तान को देखना, आपने जस्ट कॉन्सेप्ट समझना है। Ali, you're closer to the correct. Yes. Simple majority is majority of the votes that are present. Majority of the votes are majority of the members present and voting. Majority of the members present and voting is called simple majority. 50% plus 1, yes, but 50% किसके? जो total membership है? नहीं, of those who are present and voting. That is called simple majority. Now let me give you an example. पाकिस्तान के लोअर हाउस की मेंबरशिप है 342। जब I was not selected, Bill was actually amended. He was selected and elected. 342 members, 342 में से let's suppose उस दिन जो मौजूद लोग थे they were 200, बाकी 150 लोग नहीं आ सके, कोरोना है, नहीं आ सके किसी वजह से, कोई फैमिली इशू है, एनीथिंग। 200 were present. Out of 200, 150 participated in voting. 150 voted. 50 ने कहा हम बाइकआउट करते हैं, हम वोट नहीं डालते, या सो रहे थे असेंबली में। They were not voting.
150 वोटेड, 150 के अंदर से 50% प्लस 1 निकालेंगे, दैट विल बी 76। तो ये जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी फ्रॉम दोज हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग, दोज हु आर प्रेजेंट, जो मौजूद भी हैं और वोट भी डाल रहे हैं, उनमें से मेजॉरिटी निकालना, दैट इज कॉल्ड सिंपल मेजॉरिटी। मेंबरशिप 300 है चाहे 3000 भी होती है, जितने मौजूद हैं और जितने लोग वोट डाल रहे हैं, उनमें से जो मेजॉरिटी ली जाती है उसको हम सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं। इज इट क्लियर? irrespective of how many are absent, irrespective of how many are present, जो मौजूद हैं वोट डाल रहे हैं, उनमें से मेजॉरिटी को निकालना, that's called simple majority। प्लीज टेल मी यू अंडरस्टूड इट, ताकि हम आगे चलो। आसान है। Okay, now absolute majority is 50% plus 1 of total membership। 50% प्लस 1। अहमद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता पोजीशन हो या ना हो, जो मौजूद है और वोट डाल रहे हैं उनमें से मेजॉरिटी निकालेंगे, सिंपल मेजॉरिटी आएगी। सिंपल लॉजिक। डज नॉट मैटर अपोजिशन में कितने वोट पड़ रहे हैं, इट डजंट मैटर एट ऑल। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज 50% प्लस 1 ऑफ टोटल मेंबर्स। नाउ यू डोंट टेक मेजॉरिटी फ्रॉम दोज हु आर प्रेजेंट। अच्छा फर्ज करें, मतलब सुनिएगा प्लीज, लेट्स सपोज देयर आर 340, हमारे पास पाकिस्तान में 342 मेंबर्स हैं, उस दिन मौजूद थे 250, वोट डाला 200 वालों ने, 250 लोग उस दिन प्रेजेंट थे, 200 लोग वोट डाल रहे हैं। अब ऐसे पॉइंट देखिए, मैं आपको सवाल कर रहा हूं कि 250 लोग मौजूद थे, 200 ने वोट डाला, 50 ने बाइकआउट किया। अब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कितने की चाहिए होगी? हाउ मच विल बी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी? सर यू आर राइट जी, 342 में से 50% हो जाएगा 171 प्लस 1 172। यस अब 172 टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी, जितने मौजूद हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनों ने बाइकआउट किया कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट मैटर्स इज दैट देयर हैज टू बी मेजॉरिटी ऑफ द टोटल हाउस वोट्स। अमेरिका में सेनेट के 100 मेंबर्स हैं, वहां लॉ मेकिंग के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए होती है, तो वहां पे अमेरिका में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 100 लोग हैं और उस दिन आए हैं 90 लोग। अगर अमेरिका में 100 मेंबर्स हैं टोटल सेनेट के, आए हैं 90 लोग, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए हो तो कितने वोट चाहिए? 51 रिक्वायर्ड। इट्स सिंपल। सो जहां पे लफ्ज सिंपल मेजॉरिटी लिखा हो, आपने देखना है कि कितने लोग मौजूद थे, वोट डाल रहे थे। आप टोटल मेंबरशिप को नहीं देखेंगे, यू विल नॉट सी द टोटल मेंबर्स, टोटल मेंबर्स कितने हैं वो आपका सवाल ही नहीं है। आप सिर्फ ये देखेंगे कितने लोगों ने वोट डाला और उन वोट डालने वालों में से सबसे ज्यादा वोट किसको पड़े, सिंपल। और दूसरी चीज, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मींस मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप irrespective of who are present and who are voting and all। अब एक सवाल याद रखिएगा प्लीज, कल मैंने आपको कुछ फंक्शन दिखाए थे, लॉ मेकिंग वगैरह बाकी चीजों को तो आप छोड़ दें प्लीज, लेकिन जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस है, इट ऑलवेज रिक्वायर्स एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। मेरा पॉइंट दोबारा सुनिएगा प्लीज। फॉर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड नो कॉन्फिडेंस you always require absolute majority। अगर मान लॉ मेकिंग के लिए मैं बात नहीं करूंगा, क्यों? कुछ मुल्कों में सिंपल चाहिए, कुछ में एब्सोल्यूट चाहिए, हर मुल्क का प्रोसेस वेरी करता है।
वो उसमें कोई बात नहीं करेंगे, आपको सिर्फ मेजॉरिटी के मीनिंग आने चाहिए। अभी आप अप्लाई ना करिएगा, अप्लाई करने का वैसे मैं आपको बात बताऊंगा जब हम जाके पेपर 2 पढ़ेंगे, वहां हर स्टेट में वेरी करेगा। लेकिन यहाँ सिंपल ध्यान में रख लें कि जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है हेड ऑफ द गवर्नमेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, वो हमेशा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से होगा। सो पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए थी, तो ही शुड हैव गॉट मोर देन 171 वोट्स। आई गेस अगर मैं गलती हूं तो उनको मिले थे 174 वोट मिले थे या 176 मिले थे, बट समवेयर अराउंड दैट, बट ही नीडेड 171 प्लस। अगर बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि हम इमरान खान साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना चाहते हैं, if he wanted to dismiss Imran Khan साहब, how many votes बिलावल साहब needed? 172 yes, मिनिमम इतने चाहिए, उससे ज्यादा होंगे तो वो जीतेंगे, अदरवाइज नहीं होगा साहब। ये पॉइंट है, रखिएगा जी, ये दो मेजॉरिटीज अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये दो ही नहीं है, और भी मेजॉरिटीज की नाम है, बट मैं ये बेसिक आपको बताना चाह रहा था। These are basic terms, ये ध्यान में रखिएगा। So जब भी कोई मेजॉरिटी, जब भी कोई प्लूरल हाउस लेजिस्लेचर फंक्शन करती है, इट नीड्स मेजॉरिटीज। हर मुल्क में मेजॉरिटीज का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, वो क्या है वो हम पेपर 2 में जाकर पढ़ेंगे। Anyway, let's go to the next arm of the government, judiciary पे बात करते हैं। Judiciary is the third organ of the government. Judiciary is the third organ of the government. आसानी कल बात कर चुके हैं हम लोग इस पे, लोअर हाउस का इनिशिएट भी और अप्रूवल भी लोअर हाउस से करती है, अपर हाउस में जाती नहीं। ओके, जुडिशरी इज द थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। Its basic function is to interpret the laws. It's not the only function, but its basic function is to interpret the law. अच्छा, एक सवाल है जी, उसको जरा प्लीज क्लियर कर लीजिएगा, जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा। सवाल ये है कि should it not be the third organ of the state? तो अगर आपको याद हो, कल मैंने स्टेट लास्ट क्लास में कहा था स्टेट के 4 एलिमेंट्स होते हैं, स्टेट के 4 एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, वो स्टेट के जब 4 एलिमेंट्स होते हैं तो उसमें से उसमें से पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी की बात की। अब जुडिशरी जो है वो गवर्नमेंट का थर्ड ऑर्गन है। ये गवर्नमेंट इटसेल्फ स्टेट का हिस्सा है, गवर्नमेंट इटसेल्फ भी तो स्टेट का एक एलिमेंट है, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर ये सब पार्ट, आप कह सकते हैं स्टेट की नवासा है, नवासी कह लें, पोता पोती कह लें, कोई भी कह लें। सो इनडायरेक्टली उसी की जनरेशन में से आता है। इट इज पार्ट ऑफ द स्टेट बट इट इज नॉट द बेसिक एलिमेंट स्टेट, इट इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बेसिक, उसके अंदर आता है। अहमद, मैंने फिर कहा कि पाकिस्तान, अमेरिका अभी नहीं पढ़ेंगे, वो पेपर 2 में जाके पढ़ेंगे। अभी आई विल नॉट आंसर दैट क्वेश्चन। आप यहाँ पे किसी मुल्क को नहीं पढ़ रहे, प्लीज, पाकिस्तान में प्लीज नहीं, बाद में जाएंगे। ओके, सो द पॉइंट इज, यस एग्जैक्टली, सो जो बेसिकली अदालत, जुडिशरी स्टेट का हिस्सा है। आई कांट से इट इज नॉट पार्ट ऑफ इट, बट पॉइंट इज इट इज इमीडिएटली पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का एक पार्ट है, आल्दो स्टेट का हिस्सा भी है, इनकार नहीं कर रहा उसमें, बट उसको थर्ड ऑर्गन या थर्ड state element again. Now, judiciary, which is the third organ of the government, whose basic function is to interpret the laws. On the half political science के sense में it is same. Law में they are different. But this is not the only function. They also have many other functions. वो function पे बाद में आएंगे। मैंने आपको कहा था कि जिस पे सवाल अलग से आता है, जुडिशरी के फंक्शन पे और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के कॉन्सेप्ट पे सवाल आता है। यहाँ पाकिस्तान के रेफरेंस से नहीं, फिर रिपीट करूँ जनरली। एनीवे, नाउ जुडिशरी
मैंने कहा कि ये वो ऑर्गन है जिसका काम है लॉ की इंटरप्रिटेशन। लॉ मेकिंग करती है लेजिस्लेचर, लॉ एग्जीक्यूशन करती है एग्जीक्यूटिव, और लॉ इंटरप्रिटेशन करती है जुडिशरी। जुडिशरी consists of hierarchical structures in different states. It consists of hierarchical structures for example, Supreme Court in certain states, then high courts, and then subordinate courts. So from national level to the grassroots level, there are different tiers of judiciary. From the national level to the grassroots level, there are different tiers of judiciary. अब वो कितने tiers हैं? That varies from state to state. So I would not give any particular number जी, वो vary करता है from state to state different करता है। जैसे लिखा, पर लिखिएगा नहीं प्लीज, पंचायत जगह लिखिएगा नहीं, जनरली स्पीकिंग कोई भी हो सकती है सर। So different hierarchies है, हर मुल्क की अपनी hierarchy है। Again यहाँ पे हम किसी मुल्क को नहीं पढ़े, so we will talk in general terms. Now judiciary consists of judges, who are mostly selected legal experts, who are mostly selected people, appointed people, and they are mostly legal experts. ये मोस्टली का इसलिए सवाल कर रहा हूं, कहीं पे कुछ मुल्कों में they are also elected ones, और somewhere they do not require even legal qualifications. कुछ मुल्कों में legal expert होने की qualification भी नहीं चाहिए होती। So इसलिए आप इसको generalize नहीं करेंगे। तो mostly they are selected and appointed, and they need to be legal experts. कैसे? ठीक करेंगे। Now let's see the functions of judiciary. What does it do? चार पांच बेसिक फंक्शन हैं जी जुडिशरी के that are important. One, interpretation of the law. Interpretation of the law. मैंने कहा अली mostly they are appointed people and they need to have legal expertise to become judges. Functions. Interpretation of the law. The basic function of judiciary is to interpret the laws made by legislature. The basic function of judiciary is to interpret the laws made by the legislature. This interpretation of the law can result in the new directions of the law
In other words, it can make a broad interpretation of the law, focusing on the spirit of the law, but it can also follow the text of the law. So it's up to judiciary how they interpret it. या वो text को interpret करते हैं, they strictly remain within the text, literal meaning of the law. They can also go into the spirit of the law. The main philosophy behind the law. But interpretation basic common. Second, protection of fundamental rights. There's a lot of background noise. बाकी को भी आवाज आ रही है? Is there noise? Whispering? कोई भी नहीं कर रहा, फालतू तो नहीं कर रहा। जिन्नात होंगे सर, I guess. Okay, New Year के haunting जिन्नात होंगे. Anyway. Now, come back to this point here, fundamental rights क्या होगा? तो understand कीजिए. Fundamental rights पहले understand करते हैं क्या फिर जुडिशरी बात करें. Fundamental rights are the rights of an individual as a human being. They are called natural rights. So since you are a human being, we all are human beings by the way, and as human beings we have been privileged with certain rights. We are born with certain rights. And these rights, yes, come on, they are inalienable. These rights which are inalienable, जो आपसे छीने नहीं जा सकते, they are usually guaranteed by the respective constitutions. These rights are usually protected by the constitution. अच्छा, आप में से किसी ने अगर हाब्स लॉ रूसो को डिटेल से पढ़ा हो, खासकर उसमें से, तो उनकी थीरी में ये डिबेट बड़ी डिटेल से है, नेचुरल राइट्स की और ऑल दैट. हम यहाँ क्लास में डिस्कस नहीं करते, बट है वो डिटेल से मामला. एनीवे, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. यूजुअली दीज राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस. यस, कॉन्स्टिट्यूशन सब ऊपर लिखे हैं हम लोग. तो ये होते हैं फंडामेंटल राइट्स. नाउ if a citizen's fundamental rights are violated, if a citizen's fundamental rights are violated by the individual's society or by state, if the individual's rights are violated by society, other people, by state, then judiciary have certain tools. Judiciary have certain tools through which
it can protect the fundamental rights through which it can protect fundamental rights of the people. Other Wahab, I would disagree with the definition that you have written. I respect your opinion, but I disagree. Fundamental rights are those rights which are given to individuals by the Constitution. Administrative. Administrative या non-judicial functions. नहीं हमें ऐसा नहीं है. Removal में judicial का function पाकिस्तान में होता है, दुनिया भर में नहीं होता. पाकिस्तान में judiciary can remove judiciary. दुनिया में ऐसा नहीं है. So advisory और चीज है. Advisory दुनिया भर में common है. Removal का process same नहीं. Administrative functions जिसको हम non-judicial function भी कहते हैं. Administrative or non-judicial functions. Okay. No, Ali, no, it is not. Administrative functions मतलब क्या है? These are the functions of judiciary related to administration of court system. Related to administration of court system. For example, making appointments, transfers, removals of non-judicial staff. क्लर्क को कर लें, पीएम्स को कर लें, रजिस्ट्रार जिसको पाकिस्तान में कहते हैं, इस तरह के बाकी फंक्शंस. इवन बजटिंग, इंटरनल बजटिंग, मूल की बजटिंग तो लेजिस्लेचर करती है, लेकिन इस इंस्टीट्यूशन के अंदर की जो बजटिंग है, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर दी फंक्शंस जिनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव या नॉन जुडिशियल फंक्शंस भी कहते हैं. Is it clear? So this is all ये main functions हैं judiciary के, जिसको हम कहते हैं. मैं मिसाल इसको repeat करता हूँ. The functions like these are non-judicial functions like appointment, transfers, removal of non-judicial staff of judiciary, budgeting, planning, judicial policy making, etc., etc., etc. जिसमें वर्डिक्ट नहीं सानी होती, जिसमें आपने लॉ किससे रिलेटेड नहीं है, इट इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कोर्ट्स, उससे. दिस इज ऑल ऑन द फंक्शंस. लेट्स नाउ गो टू द पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, और वो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. इस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का आपको गौर से सुनिएगा. दिस माइट कंफ्यूज यू, बट आई होप आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई थिंग्स. Okay, sir. Judiciary theoretically is part of the government. It's the third organ of the government. Zishan, no. Judiciary is theoretically the third organ of the government. But in practice, it is taken as an independent institution, but in practice, it is taken as an independent institution from other organs of the government. By almost all the states of the world. By all states. Political science की dictionary में, it's an organ of the government. It is part of the governance mechanism. But practically everywhere in the world, judiciary is considered to be independent of other
governmental affairs, other governmental departments. बड़ी इंटरेस्टिंग थी। कुछ महीने पहले की बात है, 6-7-8 महीने पहले की बात है। मुझे याद है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा था यहीं पे, और मुझे उन दिनों में एक केस में, उस वक्त मेरे जहन में नॉमिनी अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जी पोंगी लगी उनसे, उन्होंने कहा जुडिशरी इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा, हाउ डेयर यू कॉल अस पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, वी आर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन पॉलिटिकल साइंस की तमाम किताबें उठाकर देखें, आपको गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स नजर आएंगे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। बनता भी है, हमने बिल्कुल दिल पे लेना बनता है। उसकी वजह ये है कि जुडिशरी को अगर आप गवर्नमेंट का हिस्सा कह देंगे, फिर तो कॉन्सेप्ट उसका मतलब ये था कि आप सारा कुछ इमरान खान साहब के कहने पे कर रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे थे। बिकॉज ये कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी सारा। सो theoretically in political science language it is part of the government, but it is not part of the government. It has to be independent of the other governments. Why it has to be independent? Why it has to be independent? Because of the administration of justice. The principle of justice requires that judiciary has to be independent of the government. The objectivity of the judiciary, the credibility of the judiciary, trustworthiness of the judiciary, fairness of the judiciary requires it to be independent of the government. जिनको समझ नहीं आई होगी तो मैं दूसरे लफ्ज़ों में समझाता हूँ। पॉलिटिकल साइंस में पेपर 1 में जब हम पढ़ रहे हैं तो जुडिशरी इज ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन मैं पूछूं पाकिस्तान में गवर्नमेंट से क्या मतलब है? जो मर्जी मतलब ले लें, जुडिशरी नहीं होगी पाकिस्तान में। मैं पूछूं अमेरिका में गवर्नमेंट जो भी कह लें, उस गवर्नमेंट में अमेरिका में कोर्ट शामिल नहीं होंगे। लेकिन पॉलिटिकल साइंस की किताब खोल के पढ़ेंगे तो उसमें जुडिशरी शैल बी रिटन एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इज इट क्लियर? So this is simply an idea. So practically in states they are independent, but why so? असबाब जो ऊपर लिखा उन्होंने तलबा साहब ने बोला था, फिर रिपीट करता हूँ। वो जो डायलॉग मैंने बनाए थे, काफी बनाए थे मैंने कुछ। fairness, justice, independence, objectivity requires them to be independent. Yes, absolutely. It does not just a watchdog of the government, it is a watchdog of the entire society, entire state. इसका स्टेट पूरी स्टेट के द्वारा। पॉलिटिकल साइंस को ये चीजें नहीं पता, असबा नहीं पता, हम बड़े मासूम लोग हैं, हमें नहीं पता असल में। आपने एक एमफिल किया हुआ है और एक मैंने एमफिल किया हुआ है, तो इसलिए हम दोनों को पता होना चाहिए। अंडरस्टैंड कीजिएगा जी क्यों ऐसा होता है, व्हाई पॉलिटिकल साइंस हैज पुट इट एज पार्ट ऑफ इट। ऐसे तो नहीं है, लेकिन स्टिल देन काम क्या है, मकसद ये है जुडिशरी का, वो भी तो स्टेट के मामला को चलाती है। कैन स्टेट फंक्शन विदाउट जुडिशरी? नहीं। कैन स्टेट फंक्शन विदाउट एग्जीक्यूटिव? तो नेचर ऑफ वर्क इज द सेम, दे ऑल हैव टू मैनेज द स्टेट अफेयर्स। सो बिकॉज ऑफ द सिमिलर नेचर ऑफ द फंक्शंस, they have to be part of government. They are part of the governance machinery, but they are a special preserve. They are a special part. हमें 2 मिलियन केसेस इसलिए, हमारे यहाँ घर में किसी की ईंट उठा के ले जाए तो भी लोग केस कर लेते हैं। सारा काम जुडिशरी में डालना भी मुनासिब नहीं है मेरे ख्याल में। नहीं होता क्या ऐसे हमारे घरों में?
मैंने लिटरली देखा है एक घर से एक कुर्सी चोरी होने पे एफआईआर हुई है, तो उसमें भाई याद, सॉरी आई वोंट ब्लेम जजेस, ऑल ऑफ देम, दैट लिटरली हैपेंस, लॉ वाले जरा बेहतर अगेन जानते होंगे। सो द पॉइंट इज पॉलिटिकल साइंस में क्यों होता है, व्हाई, जी एग्जैक्टली। सो व्हाई, मैंने खुद एक दफा केस किया था जूस वाले पे, जूस कॉर्नर वाले पे, कंज्यूमर कोर्ट में केस किया था उसके ऊपर। एनीवे फॉरगेट अबाउट दैट, पॉइंट इज वो लंबी स्टोरी है, वापस पे आते हैं। लेकिन पॉइंट ये है, आर्गुमेंट ये है कि जो चूंकि बेसिक नेचर ऑफ वर्क सेम है ना एग्जीक्यूटिव की, लेजिस्लेटिव की, जुडिशरी की, और उनकी नेचर ऐसी है कि वो स्टेट की गवर्नेंस, स्टेट की वर्किंग के लिए चाहिए है उनका, तो इट्स पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, बट दे आर स्पेशल पार्ट, अ डिस्टिंक्टिव पार्ट, बिकॉज दे हैव टू हैव, उनकी नेचर ऑफ वर्क ऐसी है दैट दे हैव टू बी डिस्टिंक्टिव, इसलिए उनको हम अलग से लेते हैं। यस, again, so let's see now, जुडिशरी को अच्छा, अब इसको जरा प्रैक्टिकल सेंस में देखते हैं, व्हाट डज इट मीन बाय इंडिपेंडेंट ऑनर, व्हाट डज इंडिपेंडेंट होने से क्या मतलब, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मींस, independence of judiciary means Fatma, इसी पॉइंट पे आ रहा हूं, independent judiciary means that it must be free from, independent judiciary means that it must be free from the influence by any person or institution in the state, particularly free from the influence of executive and legislature. जो स्टेट के बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके इन्फ्लुएंस से, उनके डिक्टेशन से इंडिपेंडेंट हो। Because if it is not, then it is likely because if it is not, then it is likely to give verdict in favor of its masters. जो इसे कंट्रोल कर रहा होगा, जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रही होगी, वो इसे डिक्टेट करेंगे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं छोटी मिसाल देना चाह रहा हूं, पेपर लिखिएगा नहीं, छोटी सी एग्जाम्पल, अगर जुडिशरी जजेस अंडर एग्जीक्यूटिव हो, मैं में शुरू कर दिया ऑल पर्टिकुलरली गवर्नमेंट के अंदर, एग्जीक्यूटिव के अंदर जिस तरफ आप इशारा करें वो आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। अच्छा, नाउ लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान के एग्जाम समझने के लिए बता रहा हूं आपको, अगर पाकिस्तान में जुडिशरी के ऊपर कंट्रोल हो एग्जीक्यूटिव का, तो आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब को डिसमिस कर सकते थे, या वो जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर वो लेजिस्लेचर के अंदर काम कर रहे हैं। वो लेजिस्लेचर ने लॉ पास किया, पार्लियामेंट ने लॉ पास किया, जुडिशरी कहे ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेजिस्लेचर कहेगी अच्छा चलो तुम भी कर लो, लेट्स सेंड यू पैकिंग होम। देन अगर जुडिशरी को ये माइंड में हो कि अगर मैंने डिसीजन दिया एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट, जुडिशरी लेजिस्लेचर के अगेंस्ट unmarried, but they can dismiss me, they can stop my finances, they can cut short my term,
then will they give any verdict against executive and legislature? Will they be able to do justice? They won't be able to do it. There will be problem of justice in a country. तो वो एक अथॉरिटेरियनिज्म बन जाएगा, जो मैंने आपको शुरू में कहा था, कि बेसिक फंक्शन ही है कि एक हाथ में पावर ना हो, पावर शुड बी डिवाइडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, स्पेशलाइज्ड पावर होनी चाहिए, फिर वो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा. So therefore, independence of judiciary is absolute must. Okay, how to make judiciary independent? Last one. How to make judiciary independent? No. Come on, executive से judiciary में judiciary कहाँ पे आती है? Answer is no. Judiciary इस triangle से हट के है. It is a separate. अगर आपको ट्रायंगल बनाना पड़े तो मैं ऐसे बनाऊंगा कमान. अगर बनानी पड़ती है खुदा न खास्ता आपको तो मैं ऐसे बनाऊंगा. एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ये कोने में जाती जुडिशरी. दूर होती है उनसे. It will be this kind of triangle. It has to be away from that. Separation of power क्लास की नहीं करना, constitution भी हो भी सकता है, कमरा नहीं भी हो सकता, but it is independent, autonomous body. टॉपिक क्या है? ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर की डिबेट होगी कमान कि एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी में टॉपिक क्या आता है, कहां पे कौन क्या आता है, ये इन तीनों में सुपीरियर कौन है, ये डिबेट हमारे नेक्स्ट टॉपिक की है, अभी की नहीं. Let's see how to make judiciary independent, how to free judiciary from the control by executive and legislature. How to ensure, what steps can be taken to ensure independence of judiciary. अच्छा, independence of judiciary का concept US में भी है, फ्रांस के अंदर भी है, टर्की में भी है, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है. एग्जाम्पल लिखते जाइए. First, judiciary can be free by ensuring, judiciary can be free by ensuring that their appointments are not arbitrary. ऐसा आपने मुझे कहा नहीं है, सऊदी अरब में पूछना था जाके, नॉर्थ कोरिया में जाए, बहुत से मुश्किल एग्जाम्पल. ओके, सो इवन पाकिस्तान की मिसाल भी मैं डरते कह देता हूं, बट स्टिल. अच्छा, जुडिशरी की जो जजेस हैं, अगर उनकी अपॉइंटमेंट विदाउट आर्बिट्रेरी कंट्रोल हो, आर्बिट्रेरी अपॉइंटमेंट्स ना हो, सिंगल हैंडेडली कोई बंदा अपॉइंट ना कर सके, देन वी कैन हैव सम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. But if judges are handpicked by anybody, maybe head of the state, maybe head of the government, if they are handpicked of any person, then such judges are likely to be biased. आर्बिट्रेरी मतलब होता है जो भी अपॉइंट करे बगैर किसी के मशवरे से, बगैर किसी की इजाजत से, जो चाहे करे, इसको हम आर्बिट्रेरी कहते हैं. खुद साख्ता इसको बोलते हैं. So the appointment has to be in collaborative terms. The appointment must involve multiple institutions and not by one institution alone. और सऊदी अरब में यही होगा, बादशाह सलामत जिसको चाहे बना ले, तो जिसको बनाएंगे उन्हीं को. सेकंड,
Security of job. Independence of judiciary can also be ensured by providing security of job to judges. Which means that judges must not be arbitrarily removed. कोई एक इंस्टीट्यूशन चाहे आसानी से जजेस को जब चाहे रिमूव कर दे, that should not happen. मैं ये नहीं कहता कि उनको रिमूव करना ही नहीं चाहिए, I'm not saying at all. But the process of terminating their job must be made difficult. देखें, अगर वैसे लिखिएगा नहीं ग्रीन पेपर में समझाने के लिए, अगर जजेस को अपॉइंटमेंट रिमूव करना प्राइम मिनिस्टर की पावर होती, तो नवाज शरीफ साहब को जब डिस्टेंस किया गया था, तो खाकान अब्बासी साहब आते ही सबसे पहले जजेस को फारिग कर दिया. तो जजेस की कभी मजाल नहीं होती. They would never have dared to act against the executive. So their security of job is one way through which we can actually make sure that they remain independent. और ये bureaucracy में भी यही चीज चाहिए होती है. This is exactly what bureaucracy also wants, security of job, so that they can work independently. वरना हर MP आप उनको रिमूव कर देगा. Third, term of office. G, exactly true. Term of office. The term of office of judges must be prolonged because the longer they are in office, more likely they shall be independent. एक छोटी सी मिसाल देता हूं, लिखना नहीं है गेम, समझने के लिए आपको आइडिया समझा दूंगा. अगर जजेस की रिटायरमेंट की एज हो जाए 50 इयर्स फॉर एग्जाम्पल, जैसा फौज में जल्दी रिटायर हो जाते हैं लोग, उसमें और नहीं उसमें. Let's suppose if you retire at the age of 50, judges क्या करेंगे? Post retirement plan बना देंगे. They would give verdicts to appease executive maybe. They would give verdicts to appease companies, big companies, ताकि retirement के बाद उनको hire कर लिया जाए. Government उनको यहाँ appointment कर दे, वहाँ कर दे, उनको सदर बना दे, उनको ये कर दे. तो they, in order to have a post retirement plans, they would start giving biased decisions. But if the term of office is long, it is longer, then they are likely not to give favors to anyone. If you know, यहाँ पे double लिखिएगा. For example, in US, the Supreme Court judges, they are judges for life. Till death ना क्या है, till life के जब तक गुजरना है. वो रिटायर करना चाहिए, खुद से रिजाइन कर सकते हैं, but they are judges till their life. Okay. Fourth and last, perks and privileges. Perks and privileges. Then I don't know how that relates to judiciary. I mean, judiciary का काम अगर इनमें से कोई और हो, अगर तो भुट्टो साहब की नेशनलिस्ट का प्रोसेस, बाकी प्रोसेस, ये इनमें से कोई लॉ की वायलेशन थी या judiciary did not act,
If you mean that, तो I doubt ऐसा था. Nationalization can be done through executive orders. He had the power to. Law making it possible. ये special power officer भी उनकी powers थी. Perks and privileges. Now, perks and privileges से मतलब है that judiciary, the judges, if judges are given due perks and privileges, if judges are given due perks and privileges, means they get higher salaries and associated benefits. Additionally, if their perks and privileges are protected by law, from any reductions or deductions, in that case, judiciary can be made independent. मैं इस क्वेश्चन में आ रहा हूँ, पहले ये पॉइंट लिख कर तो दिलाता हूँ. ओके, आई रिपीट दिस पॉइंट. एक तो मैंने कहा जजेस के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हाई होने चाहिए. They must be given more salaries, more benefits than other people. Plus, their perks and privileges must not be taken away from them. सैलरी कम कर दें, डिमोट कर दें, उनसे घर वापस ले लें, उनको जब बेनिफिट्स दिए आप उनसे रिटर्न कर लें. अगर ऐसा ना हो सके, जो बेनिफिट्स दे दिए कम ना हो सके, in that case judiciary shall be free and independent. कैसे? How? So if judges have higher salaries, higher perks and privileges, then they are less likely to be bribed. And secondly, yes, exactly. And secondly, if their perks and privileges cannot be taken away by executive or legislature, then judiciary shall have a free mind to give verdicts and decisions without the fear of losing their perks and privileges. Yes, for true. ऐसे ही है. Agreed. Right. So this is all जी. ये मेन पॉइंट्स हैं सारे के सारे. एक सवाल था ऊपर, मैं भूल गया उसका सवाल. अच्छा, सवाल ये था कि पाकिस्तान में क्या ये सारे दिए जाते हैं पर्सनल प्रिविलेजेस? और मोस्टली यस दे आर. अजान हो जाए फिर बात करते हैं. जस्ट वेट फॉर जी, मैं सवाल भी आ रहा हूँ.
जी क्वेश्चन जी, क्वेश्चन में आंसर कर दूं। फॉर क्लैरिटी, हर स्टेट अपॉइंट जजेस। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है फातिमा। पाकिस्तान में प्रोसीजर जो है वो जुडिशियल कमीशन है, फिर पार्लियामेंट्री कमेटी है, और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर है, और फिर प्रेसिडेंट आता है सारा। तो ऐसे सिंपल नहीं है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट भी इन्वॉल्व है, जुडिशियल के जजेस भी इन्वॉल्व है, मल्टीपल फोरम्स इन्वॉल्व हैं आफ्टर 18th अमेंडमेंट। पहले नहीं था ऐसे। चेक नीचे आ जाइए बस। थैंक यू फॉर राइटिंग आमना जी। प्रेसिडेंट फाइनली डिसाइड नहीं, बल्कि आपको पता है वो नॉमिनल हो जाता है, वो फॉर्मेलिटी हो जाती है प्रेसिडेंट के पास। ओके, एनी अदर क्वेश्चन जी प्लीज। वेलकम। Notes, that's a good word, someone. Okay, let's move जी, चलते हैं आगे। How? What will affect our marks? Notes लिखना वो तो नहीं होगा। Yes, yeah, it will affect. You have to give examples. Yes, you will have to. मैंने शुरू में कहा था इस सेक्शन में examples और definitions must. It's part of this. जरूरी नहीं कि हर पॉइंट के साथ दें, ये जरूरी नहीं है। जहां जहां आपको लगे frequent examples दें आप उसमें से। बट अगर आपको कहीं ना मिल रही हो पाकिस्तान से दे सकते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन गिविंग एग्जांपल्स फ्रॉम पाकिस्तान, अगर दुनिया से कहीं से ना मिले। ओके, लेट्स मूव जी। हम आ जाते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट पर। हम जाते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर। अच्छा, मुझे फिर आपकी हेल्प चाहिए होगी थोड़ी सी। गवर्नमेंट किसे कहते हैं? गवर्नमेंट, इट इज द इंस्टीट्यूशन। अच्छा, इसमें सवाल आता है। अच्छा, सवाल के साथ आता है, बीच में नहीं आता। दैट गवर्न्स स्टेट समा, बिल्कुल ठीक। सॉफ्टवेयर, एजेंसी, मशीनरी, एब्सोल्युटली राइट जी। सोल ऑफ द स्टेट, यू ऑल आर राइट। यस, डिसीजन बॉडी फॉर द स्टेट, टर्न्स ऑफ द अफेयर स्टेट, एब्सोल्युटली राइट। अगला सवाल आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट, बताइएगा प्लीज जरा। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ये 3 होते हैं, ठीक है। जुडिशरी पॉलिटिकल साइंस में डेफिनेटली होता है, ये ध्यान रखिएगा प्लीज। नाउ जब हम गवर्नमेंट की टाइप्स पढ़ते हैं, एक तो जुडिशरी को थोड़ा साइड पे रखते हैं। हमने कहा इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, सो हम यहां पे जुडिशरी को रखेंगे साइड पे। फ्रॉम दिस लेक्चर ऑनवर्ड्स, व्हेन आई विल यूज द वर्ड गवर्नमेंट, इट विल नॉट इंक्लूड जुडिशरी। Is it clear? From this moment onwards, when I will use the word government, it will not include judiciary. Separate kar dein judiciary. Now we'll be primarily talking about, yes, legislature and executive only. Focus is on only, legislature plus executive. अच्छा, अगर कर दिया दरमान तो गुनाह कबीरा होगा पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में। ओके, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हमने इंडिपेंडेंट करके उसमें। नाउ द पॉइंट इज, अब हम गवर्नमेंट की टाइप्स जब देख रहे हैं, तो ये टाइप्स की बेसिस क्या है? व्हाट इज द टाइप? जब भी टाइप करते हैं ना, जैसे क्लास में डिवाइड करना है ग्रुप्स में, आई हैव टू मेक सम बेसिस, मेन एंड वुमेन, मे बी 2021 वाले और 2022 वाले एग्जाम वाले, तो आई कैन डिवाइड ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग। So when governments are divided, that has to have certain qualities on the basis of which I would have to categorize them. I will have to divide them into types. Now the types of government, we'll study 2 types of government. हम 2 types of government को पढ़ेंगे, और वो जो 2 types of government में, it will be based on the relationship between executive and legislature.
This is a very, very important point. I repeat again. The types of government shall be defined on the basis of हमें parliamentary system the was nasal structure. Bye bye.